Hey Zerak, hope you are doing good. I assume you are watching this video when you are 30 years old. This is me, your younger version. I am currently at 25 and I have decided to document the thoughts and experiences and challenges I am going through personally, emotionally, financially, so that you can remember all of these things by looking at this video, because this version of you will exist only in this video. And as the time is moving so fast, everything is happening in such a short time, so it's a good idea to document that journey along the way. सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं कि करंटली आई एम इन लाहौर पाकिस्तान, और मैंने हाउस जब कंप्लीट कर लिया और मैंने अभी डिसाइड किया कि मैंने यूएसएमएल जर्नी को परस्यू करना है. इट टेक अस लॉन्ग टाइम टू डिसाइड कि यूएसएमएल जर्नी हमने करना है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस. द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस पाथवे वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर अस टू सॉर्ट आउट एंड डिसाइड ऑन इट. बट थैंक्स टू आवर यंगर सेल्फ, जिसने 4th ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल में डिसाइड किया कि वो एक फोटोग्राफी ब्रांड स्टार्ट करेगा. एंड उस फोटोग्राफी करने से वीडियो मेकिंग में हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल, लाइक द होल थिंग स्टार्टेड एट दैट टाइम. और फिर उससे हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी थोड़ा चेंज हुआ, रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो गया. एंड इट स्टिल बॉगलर्स माई माइंड के फोटोग्राफी से और वीडियो बनाने से हमने ज़्यादा फाइनेंसेस जनरेट किया एज़ कम्पेयर टू वर्किंग एज अ डॉक्टर इन हाउस. सो इससे काफ़ी मोटिवेशन मिली हमें कि नहीं, हम यूएसएमएल जर्नी अफोर्ड कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, और वैसे भी ख्वाब बड़े देखने चाहिए. सो आई हैव लर्न टू मूव विदाउट एनी सर्टेनिटी विच दिस पाथवे इज़ ऑल अबाउट. सो करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएल स्टेप 1. मैंने जो जर्नी है उसके बिल्कुल स्टार्ट पे हूँ. एंड यू एट 30 ईयर्स ऑफ एज, आई डोंट नो कि तुम दुनिया में कहाँ पर हो और अपने मेडिकल जर्नी में किस पॉइंट पे स्टैंड कर रहे हो. बट आई थिंक आई मेड द राइट चॉइस बिकॉज द पेन ऑफ फेलियर इज़ ऑलवेज बेटर दैन द पेन ऑफ रिग्रेट. सो एक रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि आई डिडंट टुक अप द करेज टू took this pathway. Today is January 1st, 2023 and currently I am preparing for USMLE Step 1. I am literally at the start of this USMLE journey. So फ़िलहाल प्लान यही है कि 2023 में USMLE Step 1 क्लियर करते हैं. उसके साथ साथ मैंने मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड के लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है एंड होपफुली लाइक 5 to 6 months तक उसकी भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा. एंड आई विल अप्लाई फॉर SHO जॉब्स देयर, होपफुली उसमें भी शायद कोई पॉजिटिव आउटपुट आए. एंड USMLE स्टेप 2 लाइक बाय द एंड ऑफ 2023 और इन द स्टार्ट ऑफ 2024, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंसेस वो किस तरह मैनेज होते हैं. सो फ़िलहाल करियर वाइज तो ये प्रोग्रेस चल रही है एट द मोमेंट. कमिंग टू द फाइनेंसेस, जो कि चैलेंजिंग पार्ट है जिसको मैं आजकल मैनेज कर रहा हूँ. सो लाइक आई एम वर्किंग एज अ मेडिकल असिस्टेंट करंटली इन लाहौर. सो उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है. उसके साथ साथ ये जो फोटोग्राफी ब्रांड है इससे भी फाइनेंसेस काफ़ी जनरेट हो रहे हैं, अलॉन्ग विद द यूट्यूब जो कि थर्ड फाइनेंशियल सोर्स बन गया है. चैनल इज़ मोनेटाइज्ड, लेकिन अभी इतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है इससे, लेकिन होपफुली इन द फ्यूचर इससे भी कुछ इनकम स्टार्ट हो जाएगी. सो फ़िलहाल करेंटली 3 फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं मेरे पास, लेकिन होपफुली आई विल एबल टू मैनेज द फाइनेंसेस ऑफ USMLE ऑन माई ओन. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट. बाय द एंड ऑफ 2022 मैंने ये डिसाइड किया था कि 2023 को सिर्फ मैं स्टडीज़ के लिए डेडिकेट करूँगा. आई विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम टिकटॉक, जो भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, और मैं सिर्फ फोकस तरीके से स्टडी करूँगा. बट 2022 वाज लाइक अ सरप्राइजिंग ईयर. लाइक 21st of September को मैंने एक रील पोस्ट की थी ऑन इंस्टाग्राम पे दैट गॉट लिटरली 11 million व्यूज़, और वो लाइक कम्प्लीटली वेंट वायरल ऑन इंस्टाग्राम. उसके बाद मैंने उसी तरह की एक और वीडियो पोस्ट की. द वीडियो वाज लाइक हेल्दी लंग टेस्ट, और उसके बाद मैंने आई टेस्ट, दैट वाज लाइक अ फन लिटिल गेम टाइप वीडियो. फिर मैंने ईयर टेस्ट भी की एंड तीनों की तीनों वीडियोस लाइक मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गई, और टिकटॉक पे भी वो वीडियोस इतनी मिलियंस में व्यूज़ आए. सो लाइक दोनों जो प्लेटफॉर्म्स पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई ना मेरी, like literally I went from like 4,000 followers to like 17,000 followers on Instagram, और TikTok पे भी ऐसे ही like 4 to 5,000 followers to like 25,000 followers. So I'm literally confused at the moment कि मैं still videos बनाऊँ along with preparing for the step 1 या सिर्फ step 1 पे focus करूँ.
सो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एक न्यू इवेंट हैपेंड इन my life currently. Coming to the emotional side of things, man, yeah, sometimes it gets lonely. I'm working nights, you know that, or daily 7 p.m. to 4 a.m. at work. Uske baad you sleep, then you wake up, study for the step one, and the cycle repeats. Or in between, agar koi time mile to you make a video. So yeah, it's a lonely pathway, or we have accepted the fact that medicine as a whole is filled with profound loneliness, जिसमें बस आप एक पाथे पे चल रहे हैं एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल आउट देयर जो कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं हाउ लोनली मेडिसिन समटाइम्स गेट्स. बट आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ कम्युनिटी ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टिकटॉक, जहाँ पर देयर आर पीपल एक्चुअली आउट देयर जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन पे कमेंट करते हैं. स्पेशली ऑन यूट्यूब दे आर MD कैट स्टूडेंट्स, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स, FSC स्टूडेंट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि मेरी वीडियोस को देख रहे हैं. दे फाइंड माय वीडियोस यूज़फुल एंड आई रीड ऑल ऑफ देयर कमेंट्स जो मुझे अच्छे लगते हैं. आई टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पुट अ स्टोरी ऑन माय इंस्टाग्राम. सो इससे थोड़ी लोनलीनेस कम हो जाती है. एंड मैन, इट्स 2023 एंड आई एम स्टिल सिंगल. व्हाट कैन आई से अबाउट इट? So let's see if we find someone in 2023. You at 30 have a better idea how that person came into my life. But let's see if we find someone who is into making videos like I am, have same passions like my passions, or जो कि hopefully USA वाली journey pursue कर रहा हो. So let's see कि if that happens or not. Generally, I am feeling happy and satisfied at this point. There is a bit of uncertainty about the future, we both know it, but I will try my best to take care of it so that one day you will be proud of me that I took that difficult, uncertain path and I took that risk. So yeah, let's see what happened about it. And we both know that I'm an intellectual level at a point that I don't compare myself with others. I know that the comparison just kills the happiness. So I am seeing my friends जो कि प्लैब का पाथवे परसू कर रहे हैं, कोई FCPS का पाथवे परसू कर रहा है. Some of them are married, some of them find their better halves, and there is me who took just a completely different path, जो कि वीडियोस बना रहे हैं on the internet with a vision in mind कि I will try to document my journey so that जो मेरे बाद मेडिकल स्टूडेंट्स आएंगे they will have something to look up to. जैसे कि मैं अब यूट्यूब पर सर्च करता हूँ like there will be a person from Pakistan जो कि US में ली जर्नी परसू कर रहा हो और साथ में वो उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहा हो. like there are some videos जो कि उसने स्टेप 1 से पहले बनाई हो, कुछ वीडियोस जो ड्यूरिंग स्टेप 1 बनी हो, कुछ ड्यूरिंग स्टेप 2 बनी हो. like a journey जो आपको लगे कि there is some person who is like you who have gone through all of these stages. लेकिन मैं देखता हूँ कि कोई जो पूरा जर्नी कंप्लीट कर ले तो उसके बाद एक पोस्ट आती है जिसमें सारा जर्नी लिखा हुआ होता है like you hide somewhere then you came out as a warrior. So yeah, I feel like कि इस तरह का हम जर्नी थोड़ा क्रिएट करें with time, so that will be a good thing to do. I don't know कि it will be a good idea or not, as I have not seen someone doing it. I had a lot of discussions with a lot of people about the USMLE versus PLAB thing, and everyone told me to pursue this PLAB pathway, and it was only me and my inner voice, my heart, कि नहीं USMLE की तरफ तुमने जाना है. Took this pathway. It is you know that it is impossible to see for you, but बस दिल ने कहा कि नहीं इसको करते हैं and you will make it. Then there are some things that I am still struggling with and I have not sorted out yet. The first thing is my hair. सब कहते हैं कि ये बहुत messy हैं. I don't know, मुझे हमेशा से ही curly hair अच्छे लगे हैं, लेकिन now I started to feel a bit of insecure about it. But I will take care of it, like it will not be a problem for you. Secondly, like the place in Lahore where I am at the moment, it is literally 4 a.m. in the morning जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. And I'm sure you will be at a quieter place. Literally ये जो लाहौर में जिधर मैं रह रहा हूँ, it is like इन मेन पे घर है और जो मेरा रूम है वो भी फ्रंट पे है. सो पूरा दिन में इतनी ज़्यादा शोर होता है ना लाइक यहाँ पर, और मैं वीडियो नहीं बना सकता बिकॉज वॉइस में बैकग्राउंड नॉइस आता है बहुत ज़्यादा. ट्रैफिक की आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है और यू नो के बीच में एकदम से कोई हॉर्न वगैरह है तो वो आप उसको
कैंसिल आउट करना बहुत मुश्किल है. सो इन जनरली वीडियो मेरे लिए बनाना थोड़ा मुश्किल होता है. लाइक दैट इज़ द रीज़न मेरी वीडियोस भी बड़ी कम आती हैं. So like you will be at a quieter place and you have sorted this thing out, or you are making more videos than I'm making at the moment. Lastly, I wanna mention that I am having like a little bit of difficulty in choosing the people who are right for me, जो कि मेरे साथ connect करते हैं, click करते हैं, because I try to create like positive vibes around myself, around my surrounding. एंड जनरली जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो फेलो डॉक्टर्स हैं, लाइक दे आर काइंड ऑफ डिप्रेस. उन लोगों के साथ कनेक्ट करना है जो पॉजिटिव वाइब्स लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में. सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग पॉइंट है जिस मेरी लाइफ में एट द मोमेंट. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक केयर ऑफ़ इट. एंड या बाकी जनरली यही सब कुछ था. करेंटली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डील विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड यहाँ पर आई थिंक वीडियो का एंड करते हैं. I'm sure you are happy wherever you are in your life at 30 years of your age. Either you are in the US, in Ireland, or UK, wherever you are in the world, or in Pakistan. So let's see how the things unfold for you, and I will try my best कि जो चीज़ें हैं वो in the best possible way में हूँ. And you are proud of me one day. Unfortunately or fortunately, your fate is currently in my hands, and I will try my best to make it the best possible version for you. Take care of yourself and keep making videos like this. It will be our legacy for sure in the long run. And I'll see you soon. Bye bye.